and the concluding lecture of. Hope you are getting a clear picture. I think it's a bit blur picture we are getting. It's a bit blur. Okay. During the time period, it will get clear. So just a second. I think so. It's getting a bit blur. Okay, so now the picture is too clear again. Okay, so we are here with concluding lecture of periodic table, and today this chapter will be done. So in between it's getting a bit blurred because of the maybe lights. It's okay. Is there anyone? Is there any complaint regarding the picture getting bit blurred picture? Yeah, you are getting clear picture. Yes, please. Okay. There isn't any response. That means I will consider that you are getting my voice well as my picture well. Thank you, Payal. Okay, thank you. Yes, thank you, but clear. Okay. So this is the concluding lecture for the periodic table, and we are already at the concluding part of this chapter. That is, you can say, trends in physical properties of the elements over here. And the last part, what we have discussed, the trends in chemical properties. There are only 3 trends in chemical properties what we have discussed. Now, 2 trends in physical properties are remaining. First, we are discussing trends in physical properties, and furthermore, we'll move onwards to next, that is trends in chemical properties. So let's move. Trends in physical properties. What we have discussed in last lecture, discussed atomic radius, ionic radius. So what is this atomic radius? How it is measured? Then how is the trend for this atomic radius? How it changes? That is also what we have discussed. And why? And how this nuclear effective nuclear charge and shielding effect is responsible for this atomic radius. That is also what we have discussed. Ionic radius. We have seen that any of the atom by loss of electron, gain of electron gets converted into ions, and that is called a, you can say, ionization process. And we have seen that that is radius of that ion. Either it is cation, either it is anion. Generally, metal has a tendency to lose electron and form a cations. And we have measured the radius of the cation. Generally, it is larger, smaller. Sorry. And in case of anions, the radius is generally larger because of the acceptance of electron. Size little bit increases, and that's why size of anion is comparatively larger and size of cation is comparatively smaller. So we have seen also a trend regarding that. So while moving left to right across the period, what happens about the trend, and top to bottom, what happens about the trend? That is also what we have seen here in last lecture. Third is nothing but ionizational enthalpy or ionizational potential. Let's move to ionizational enthalpy or ionizational potential. That is what we have discussed in even last lecture. Ionizational enthalpy or ionizational potential is the amount of energy required to remove the electron from outermost orbit or outermost shell of an atom. किसी भी atom के outermost shell से electron हटाने के लिए, remove करने के लिए जो energy supply करना पड़ता है, that energy is nothing but the ionizational enthalpy or ionizational potential. Enthalpy मतलब energy, energy मतलब enthalpy. That is also called as ionizational potential. IE or IP is a short form which is used. So in that sense, the amount of energy required to remove the electron from the outermost orbit of an isolated gas atom is called as ionizational enthalpy or ionizational potential. This is the example of sodium would be again. Sodium का last electron हटाना है अगर हम लोगों को, तो that is 494 kilojoule energy is needed to remove the electron from the outermost orbit of sodium. That is also what we have seen here. Calcium के case में देखा हमने. Here in this case we have removed the first electron here in calcium and Cl plus is formed, and here calcium plus is taken and its another electron is removed. So this is calcium plus, and here calcium plus is formed. So here one more electron is removed. So first electron हटाने के लिए जो भी energy लगता है उसे कहा जाता है first ionizational potential, और second electron हटाने के लिए जो भी energy लगता है उसे कहा जाता है second ionizational potential. That is what we can see here. So this is the way how we have studied this ionizational potential and ionizational enthalpy too again. So
ये देखा हमने और उसका ट्रेंड भी देखा था हमने. Ionization enthalpy depends upon atomic size. यूनिवर्सिटी प्रश्न पे atomic size दिया seen over here. So periodic table के अंदर top to bottom atomic size increase होता है, that's why IP decrease होता है. Atomic size बढ़ेगा तो attraction for the electron with the nucleus decreases because of the distance, and that's why easily electron can be removed. या फिर less amount of energy is required to remove the electron. So IP is inversely proportional to atomic size. So down the group, atomic size is larger, and that's why IP is smaller. Across the period, atomic size decreases, and that's why IP increases. So sodium का IP कम है और क्लोरीन का IP ज्यादा है, because क्लोरीन का atomic size छोटा है और क्लोरीन का सोडियम का atomic size बड़ा है. So that's why larger the size, small is the IP. Smaller the size, more is the IP. That is what we have seen regarding the trend. So left to right IP increases and top to bottom IP decreases. That is also what we have seen the trend. One more thing, जो मैंने last lecture में आपको बताया था कि this is the trend, general trend for the ionization potential or ionization enthalpy. But there are some certain irregularities. There are uncertainties. हम जब यहाँ से मूव करेंगे तो सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन की बात करते हैं हम लोग. सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन की बात करते हैं. तो इस तरफ है जो है वो आईपी इंक्रीज होता जाता है. तो हम फास्फोरस, सल्फर की बात करते हैं, सिलिकॉन की बात करते हैं, तो सिलिकॉन से फास्फोरस का आईपी ज्यादा होना चाहिए, फास्फोरस से सल्फर का आईपी ज्यादा होना चाहिए. लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है. फास्फोरस का आईपी जो है वो ज्यादा है देन द सल्फर, एंड द रीजन बिहाइंड दैट इज नथिंग बट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर तीन टाइप आते हैं. नंबर 1 फुलफिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, नंबर 2 हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एंड नंबर 3 पार्शियली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. पार्शियली फिल्ड. अब देखिए किसी भी सेल के अंदर, किसी भी सबसेल्स के अंदर जितना कैपेसिटी है उतने इलेक्ट्रॉन है तो उसे फुलफिल्ड कहते हैं. फॉर एग्जांपल पी की बात करते हैं, वो पी सबसेल की बात करते हैं. किसी भी एटम के पी सबसेल में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और उसके अंदर अगर मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स है, उसके अंदर अगर मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स है तो उसे कहा जाता है इनका से फुलफिल्ड. उसके अंदर अगर आधे इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है, उसे कहा जाता है हाफ फिल्ड. और बाकी सारे नंबर के कोई भी इलेक्ट्रॉन होगा 1 2 4 5 तो उसे कहा जाता है पार्शियली फिल्ड. So in that sense, if any subset is fulfilled up to its maximum capacity, it is called as a fulfilled orbital. If it is having half electrons, that is called as half filled electronic configuration, and the rest numbers are called as partially filled atomic orbital or electronic configuration. Now, thing is that if orbital is fulfilled, more energy is required to remove the electron from that. So IP of fulfilled electronic configuration is more than half filled than partially filled. So least energy is required to remove the electron from partially filled electron. Higher energy is required to remove the electron from completely filled atomic orbital. So in that sense, you can see here, किसी भी एटम का आउटरमोस्ट शेल अगर फुलफिल है तो ज्यादा एनर्जी लगेगा, ज्यादा आईपी होगा. हाफ फिल्ड है तो उससे थोड़ा कम है, और पार्शियली फिल्ड है तो उससे भी कम है. So in that sense, this is the sequence. So depending upon which electron we have to remove, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बताता है, कौन से ऑर्बिटल से और कौन से सेल से इलेक्ट्रॉन हटाना है, उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा आईपी. एंड दैट्स व्हाई though the trend is like this, there are some certain irregularities. क्योंकि फास्फोरस के अंदर फास्फोरस का आउटरमोस्ट ऑर्बिटल हाफ फिल्ड है, सल्फर का पार्शियली फिल्ड है. सो फास्फोरस नीड्स मोर एनर्जी टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन देन द सल्फर. एक्चुअली एक्सपेक्टेड क्या था, sulfur should have higher energy than the phosphorus, but phosphorus has higher because of half filled electronic configuration, and sulfur has partially filled. So this is what we can say electronic configuration regarding ionization potential. That is, you can say third trend. Now let's move to fourth trend. That is what we are discussing here under this. Okay. Okay, so fourth trend is nothing but you can say electron gain enthalpy. Electron gain enthalpy. अब देखिए, what is this electron gain enthalpy? Already हमने ionization देखा हुआ है. Whenever any atom loses an electron forms cation, or whenever any atom gains an electron, it is called as anion. So suppose this is M is the element which accept an electron. It accepts an electron, and here M minus is formed here. So M is a neutral element. This element accept electron. M minus is formed. एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा -1 चार्ज,
2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, -2 चार्ज, सो ऑनवर्ड्स ये आ जाता है। एंड ये जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया जाता है तब एनर्जी रिलीज होता है। देखिए इसके पहले हमने आईपी में देखा, आईपी में क्या देखा, हमें लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर हटाना है ना, जैसे कि हमने सोडियम की बात की थी, सो दिस इज द फर्स्ट सेल, दिस इज द सेकंड सेल एंड दिस इज द थर्ड सेल, तो दिस इज न्यूक्लियस प्लस चार्ज एंड दिस इज द इलेक्ट्रॉन, देयर इज अट्रैक्शन बिटवीन देम। तो हमने थर्ड पॉइंट में ये देखा था, थर्ड पॉइंट के अंदर ये देखा था कि वी हैव टू रिमूव दिस लास्ट इलेक्ट्रॉन, और लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर हमें रिमूव करना है तो एनर्जी हमें सप्लाई करना पड़ता है इन ऑर्डर टू ब्रेक दिस अट्रैक्टिव फोर्सेस। तो अगर अट्रैक्टिव फोर्सेस ब्रेक करना है तो एनर्जी सप्लाई करना पड़ता है। अभी इस एटम के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो अट्रैक्टिव फोर्स क्रिएट होता है, और अट्रैक्टिव फोर्स क्रिएट होता है तो एनर्जी रिलीज होता है। देखिए उल्टा है, इलेक्ट्रॉन हटाना है तो एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू ब्रेक दिस अट्रैक्टिव फोर्सेस, और जब इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो एनर्जी रिलीज होता है, एनर्जी रिलीज होता है। तो इस तरीके से है, सो जब इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो एनर्जी रिलीज होता है, और उसी इलेक्ट्रॉन को ब्रेक करना है तो एनर्जी सप्लाई करना पड़ता है, एज लाइक ए डिपॉजिट। जैसे हम लोग घर रेंट पे लेते हैं तो डिपॉजिट देते हैं, और हम जब घर छोड़ के चले जाएंगे तो अपना डिपॉजिट लेके वापस चले जाएंगे, तो उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन जब इसके अंदर ऐड होता है तो एनर्जी रिलीज होती है, और इलेक्ट्रॉन को हटाना है तो एनर्जी उतनी सप्लाई करनी पड़ती है, एंड दिस इज एनर्जी नथिंग द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। सो दिस इज द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। सो इसके अंदर देखिए कि दिस इज द एलिमेंट व्हिच इज अ न्यूट्रल एलिमेंट इन व्हिच इलेक्ट्रॉन इज एडेड and this negative charge is formed or anion is formed. At that time some energy is released, and this is, you can say, electron gain enthalpy. See, enthalpy is noted by delta H. Everyone ये याद रखिए, 12th स्टैंडर्ड में हम डिस्कस करेंगे। डेल्टा H इज कॉल्ड एज एंथैल्पी, मतलब एनर्जी। एंथैल्पी एनर्जी का दूसरा नाम है जो हम लोग थर्मोडायनामिक्स नाम के केमिस्ट्री में उसे यूज करते हैं। सो एंथैल्पी इज एनर्जी, डेल्टा H इज एनर्जी। तो ये डेल्टा H भी एनर्जी है, लेकिन कौन सा है, इजी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। यहाँ पे इजी लिखा है, और इसके अंदर हमने वहां पे आई लिखा था, दैट इज एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन। सो दिस इज द एंथैल्पी, मतलब एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन। तो ये एटम जब इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी रिलीज होती है, यहाँ पे रिलीज होती है, ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी यहाँ पे रिलीज होती है। और कल मैंने एग्जांपल दिया था उसके अंदर, इससे अगर हम लोग क्लोरीन की बात करते हैं तो क्लोरीन Cl gains 1 electron to form Cl minus, और इसका जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, दिस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज नथिंग बट 342 किलो जूल है, 342 किलो जूल इतना एनर्जी रिलीज होता है। एंड दिस इज व्हाट वी हैव सीन इन लास्ट लेक्चर 2। मैं वापस उसी एग्जांपल को यहाँ पे दोहरा रहा हूँ। So this is a non-metal chlorine which when accept an electron, this much amount of energy is released, and this is called as electron gain enthalpy. तो पहले electron gain enthalpy समझिएगा। Whenever any atom accept an electron, it release the energy, and that energy is nothing but electron gain enthalpy. So the amount of energy released for gain of 1 electron is of first electron gain enthalpy. Amount of energy released for second gain of electron, that is what is the second electron gain enthalpy, like that you can have here, but it is the electron gain enthalpy what we can say. So this is electron gain enthalpy what we get here. Now thing is that what is the trend for this electron gain enthalpy? What is the trend for this electron gain enthalpy? Electronic gain enthalpy again depends upon the atomic size. Atomic size के ऊपर depend करेगा। Be clear, smaller the size, more is the energy, more is the energy. And larger the size, less is the energy. So that's why you can say electron gain enthalpy is inversely proportional to atomic size. Smaller the size, higher is the electron gain enthalpy, and larger the size, small is the electron gain enthalpy. तो हम इसमें देखते हैं कि टॉप टू बॉटम एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है। सो एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता है, और शील्डिंग इफेक्ट जब बढ़ेगा तो ये जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वो कम होता है, बिकॉज एटॉमिक साइज जब बढ़ता है तब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम होता है, और एटॉमिक साइज जब छोटा होता है तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बढ़ता है। तो टॉप टू बॉटम जब हम आते हैं पीरियोडिक टेबल में तो एटॉमिक साइज बढ़ता है, और जैसे एटॉमिक साइज बढ़ेगा एनर्जी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीज होगा, उल्टा हो जाता है। और लेफ्ट टू राइट की बात करते हैं तो सोडियम इज लार्जर और क्लोरीन इज स्मॉलर, तो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा है और सोडियम का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम है। सो ट्रेंड क्या होगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीजेस लेफ्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम इट डिक्रीजेस, दिस इज द ट्रेंड। सो यू कैन से लेफ्ट टू राइट electron gain enthalpy increases, and top to bottom it is decreases. Trend almost remains the same, that is you can say electron gain enthalpy, or यहाँ पे you can say electron gain enthalpy is inversely proportional to atomic size. So this is the phenomena what we get here, समझ रहे? So this is the trend
regarding electron gain enthalpy. सबसे पहले मैंने electron gain enthalpy clear किया. What is electron gain enthalpy? Amount of energy released whenever any atom accepts an electron, and that energy is nothing but the electron gain enthalpy. Electron gain enthalpy is inversely proportional to atomic size. That means left to right, atomic size decreases, atomic radius decreases, and that's why electron gain enthalpy increases, because effective nuclear charge remains the same, but size decreases. Or top to bottom, when we talk about top to bottom, atomic size increase होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, लेकिन एट द सेम टाइम शील्डिंग इफेक्ट भी बढ़ता है, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम होता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम होता है. तो टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीजेस और लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी increases. This is the trend regarding electron gain enthalpy. Clear with this? So electron gain enthalpy, that is what we are clear with here. Okay. Next is nothing but you can say fifth one, electronegativity. Electronegativity. This is the last trend in physical properties. So last trend in physical properties is nothing but the electronegativity. Now, what is this electronegativity? Now see, every atom in periodic table have the tendency to attract electron towards itself. Every atom in periodic table has the tendency to attract electron towards itself, and the tendency of an atom to attract electron towards itself is called as electronegativity. क्लियर ना गया? जिस तरीके से हर इंसान पैसा अपनी तरफ खींचना चाहता है, हर इंसान पैसा अपनी तरफ खींचना चाहता है, ऑलमोस्ट कोई एक्सेप्शन हो सकता है उसे, हर इंसान पैसा अपनी तरफ खींचना चाहता है, उसी तरीके से पीरियोडिक टेबल का हर एटम इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचना चाहता है. And this tendency of an atom to attract electron towards itself, the tendency of an atom to attract electron towards itself is called, you can say, electronegativity. Everyone getting it? What is electronegativity? It is the tendency of an atom to attract electron towards itself. हर एटम इलेक्ट्रॉन खुद की तरफ खींचता है, खींचना चाहता है, और ये जो खींचने की टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन खुद की तरफ, उसे कहा जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. नाउ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज आल्सो रिलेटेड विद एटॉमिक साइज. सेम ट्रेंड है जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का था. जिस तरीके से ट्रेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का था, उसी तरीके से ट्रेंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का है. Electronegativity is also inversely proportional to atomic size. So you can say this is electronegativity. Electronegativity is inversely proportional to atomic size. क्योंकि देखिए ना, इलेक्ट्रॉन के बारे में सबसे ज्यादा एफिनिटी किसे होगा? Smaller the size, more is the affinity for the electron. Smaller the size, more is the affinity for the electron. And larger the size, less or least is the affinity for the electron. And that is what we can say about this one. So उसी तरीके से अगर देखते हैं हम लोग periodic table में लेफ्ट टू राइट एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता है, और जब साइज डिक्रीज होगा, रेडियस डिक्रीज होगा, तो एफिनिटी फॉर द इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, एंड दैट्स व्हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर आल्सो इंक्रीजेस. क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑल अदर एटम्स हियर इन दिस पीरियड. तो सोडियम और क्लोरीन की बात करते हैं, तो सोडियम से लेकर क्लोरीन तक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जाती है. सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड क्या है? सोडियम से लेकर क्लोरीन तक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, मतलब अक्रॉस द पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, इंक्रीज होती है, और टॉप टू बॉटम साइज बढ़ता है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, सील्डिंग इफेक्ट भी बढ़ता है, तो इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होता है, टॉप टू बॉटम डिक्रीज होता है. तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड ये कहता है टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है, और लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आल्सो रिलेटेड विद एटॉमिक साइज, आल्सो कॉल्ड एज एटॉमिक रेडियस, एंड दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल. So larger the size, smaller is the electronegativity. Smaller the size, larger is the electronegativity. That is also what we can say the trend regarding this electronegativity. Got it, everyone? So what is this electronegativity once again? Electronegativity is the tendency of an atom to attract electron towards itself. The tendency of an atom to attract electron towards itself is called as electronegativity. Every atom in periodic table try to attract electron towards itself, but few atom has more electronegative power than the other, and the reason behind that is that the larger effective nuclear charge, less shielding effect is the responsible factor for that. So while moving across the group, size decrease hota hai, atomic size decrease hota hai, effective nuclear charge बढ़ता है, and that's why the electronegativity also increases. Top to bottom
effective nuclear charge though increases, shielding effect also increases, and that's why the affinity for the electron decreases, and that's why electronegative power also decreases top to bottom. So this is the trend. So these are the 5 trends in physical properties of these elements in periodic table. So number 1 trend is atomic radius, number 2 is ionic radius, number 3 is ionizational enthalpy or ionization potential, number 4 is electron gain enthalpy, and number 5 is electronegativity. इसमें से किसी भी ट्रेंड को अगर हमें एग्जाम में लिखना है, हमें एक्सप्लेन करना है, तो सबसे पहले उस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। हम मानो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो व्हाट इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, पहले उसका आंसर दे दो। पूछा या नहीं पूछा दैट डजंट मैटर, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पहले क्लियर करो, देन उसका ट्रेंड क्या है पीरियड टेबल में वो क्लियर करो, और वो क्यों ऐसा है वो क्लियर करो, दैट्स ऑल। किसी भी इसके बाद एटॉमिक रेडियस है क्या, कैसे मेजर करते हैं, एटॉमिक रेडियस लेफ्ट टू राइट टॉप टू बॉटम होता क्या है और किस कारण से होता है, ये आंसर देंगे वो टॉपिक खत्म हो जाता है। सो इन दिस वे वी हैव डिस्कस्ड all these 5 trends in periodic properties or periodic elements or physical properties. Clear with this? So that is what we can say trends in physical properties. Now let's move to the trends in chemical properties. Hope there isn't any doubt to anyone. Okay, now we are here. Trends in chemical properties. Trends in chemical properties. Okay, so trends in chemical properties. There are 3 trends in chemical properties what we have discussed. Number 1, trends in valency. Number 2, trends in metallic and non-metallic character. And number 3 is chemical reactivity. Chemical reactivity. These are the 3 points what we have to discuss under trends in chemical properties. There are 3 important properties. Number 1 is valency, number 2 is metallic and non-metallic character, and last is chemical reactivity. So let's go to the first, that is valency. See, the chemical property of each and every element had some physical property, each and every element had some chemical properties. Chemical properties मतलब क्या होता है कि उसका किसके साथ किस तरीके से रिएक्शन होता है, कौन से एलिमेंट के साथ किस तरीके से रिएक्शन होता है, दैट इज कॉल्ड एज केमिकल प्रॉपर्टी, और क्या प्रोडक्ट तैयार करता है। और फिजिकल प्रॉपर्टी में हमने क्या भी जो आयनाइजेशनल पोटेंशियल, एटॉमिक साइज, एटॉमिक रेडियस, ऑल दीस आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज। Valency is one of the very important chemical property which is related with each and every element, and that affects the reactivity, chemical reactivity. So that's why valency is very important. What is valency? हम जानते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट आप बहुत दिनों से देखते आए हो, कार्बन इज टेट्रावैलेंट। एक्सप्लेन, कार्बन इज टेट्रावैलेंट मतलब कार्बन की वैलेंसी 4 है, एक्सप्लेन करो। ये शायद आपने स्कूल में भी आंसर दिया इसका, अभी भी आप लोग देख रहे हो 11th 12th में भी आप उसे देख रहे हो कि कार्बन इज टेट्रावैलेंट, कार्बन 4 बॉन्ड तैयार कर सकता है। वैलेंसी कई सारे डेफिनेशन है, वैलेंसी के कई सारे डेफिनेशन है, हर बुक में हर चैप्टर में वैलेंसी की अलग डेफिनेशन मिलेगी, अलग कॉन्सेप्ट की सबसे अलग डेफिनेशन मिलेगी। वैलेंसी की सबसे अहम डेफिनेशन ये है, द कैपेसिटी ऑफ एन एटम टू फॉर्म अ बॉन्ड इज कॉल्ड एज वैलेंसी। ओके, सो सबसे पहला देखिए, वी आर डिस्कसिंग वैलेंसी। Valency is capacity to form bonds. कोई भी एटम कितने बॉन्ड तैयार कर सकता है, कोई भी एटम कितने बॉन्ड तैयार कर सकता है दूसरे के साथ। जैसे कि हम लोग मीथेन की बात करते हैं, मीथेन कार्बन 1 2 3 4, in this one we can say carbon has formed 4 bonds, and that's why carbon is tetravalent। 4, tetra मतलब 4, valent मतलब bond। Carbon can form 4 bonds, and that's why carbon is a tetravalent। So valency is the capacity to form a bond। कौन सा भी एटम कितने बॉन्ड तैयार कर सकता है उसे कहा जाता है वैलेंसी,
उसे कहा जाता है वैलेंसी. That's valency matters. So carbon is the element which must react with 4 hydrogen atoms to form methane molecule. Calcium form 2 bonds. So calcium reacts with chlorine to form calcium chloride-like substance. It has a capacity to form a 2 bond. And this valency depends upon number of unpaired electrons in the outermost orbit, outermost shell. Number of electrons, unpaired electrons in the outermost shell. So while moving left to right, top to bottom in a periodic table. Periodic table की अगर बात करते हैं हम लोग periodic table की. So this is top, this is bottom, this is left, and this is right. So हम top to bottom अगर move करेंगे, top to bottom, तो किसी भी group में valency same होता है. देखिए यहाँ पे noble gases है. Noble gases के बाजू में halogens है. Halogens की अगर बात करते हैं, तो halogens में यहाँ पे chlorine, fluorine, chlorine, bromine, iodine, astatine, ये सारे हैं. So down the group, fluorine, chlorine, bromine, iodine, everyone has a -1 valency. They has -1. मतलब they have valency 1. मतलब all these elements can form a 1 bond. So during the across the group, down the group, valencies remain the similar because outermost electronic configuration remain the similar, and that's why they have the same capacity to form a bond. So across the group, valence remain the same because number of outermost electron remain the same, and that's why they have the capacity to form same bonds. जितने बॉन्ड क्लोरीन तैयार करता है उतने फ्लोरीन उतने ब्रोमीन उतने आयोडीन सब वही करते हैं. किसी भी ग्रुप में आप देखिएगा वही होता है. सो दैट इज व्हाट वी कैन से ट्रेंड फॉर द वैलेंसी. हम लेफ्ट टू राइट की अगर बात करेंगे तो लेफ्ट टू राइट वैलेंसी का ट्रेंड बढ़ता जाता है. सो एक सर्टेन लिमिट तक बढ़ता जाता है, वापस वो डिक्रीज होता जाता है, वापस वो डिक्रीज होता है बिकॉज़ हाउ मच नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट पर्टिकुलर एटम कैन लूज और हाउ मच नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट पर्टिकुलर एटम कैन गेन डिपेंड्स अपॉन दैट. सो दैट फैक्टर डिपेंड्स अपॉन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. सो एनी एटम कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, उसके हिसाब से वो कितने बॉन्ड तैयार कर सकता है वो डिपेंड करता है. सो एक्सट्रीम लेफ्ट और एक्सट्रीम राइट में वैलेंसी 1-2 होने के चांसेस है. इन बिटवीन इंक्रीज होता जाता है फिर डिक्रीज होता जाता है. सो यहाँ पे लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो वैलेंसी बढ़ता जाता है और फिर वापस डिक्रीज होता जाता है. लाइक दैट. दिस इज व्हाट वी कैन सी हियर द ट्रेंड व्हाट वी कैन से फॉर द valency. So valency is the capacity of an atom to form a bond. And we have seen the trend across the group, valency remains the same, but across the period, valency changes, depends upon the outermost electronic configuration. That is nothing but the valency. Next is nothing but the metallic and non-metallic character. ये तो आप बचपन से जानते हो. जैसे हमने साइंस पढ़ना शुरू कर दिया, हम लोग मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलाइट जानते हैं. तो पीरियोडिक टेबल में मेटल्स कहाँ पे हैं, नॉन मेटल्स कहाँ पे हैं, मेटलाइट कहाँ पे, आप अच्छी तरह जानते हो. और केमिकल पॉइंट ऑफ व्यू आप देखिए, भले हम लोग मेटल्स अच्छी तरह जानते हैं, नॉन मेटल्स अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन केमिस्ट्री की भाषा में किसे कहेंगे हम लोग मेटालिक, किसे कहेंगे नॉन मेटालिक. द मेटल और एलिमेंट व्हिच हैज द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज मेटालिक, एंड द एलिमेंट व्हिच हैज द टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन कॉल्ड एज नॉन मेटालिक. सो देखिए, मेटालिक एंड नॉन मेटालिक डिपेंड्स अपॉन टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन और टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन. एक्सट्रीम लेफ्ट साइड में सारे मेटल्स है और मेटल हैज द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन. एक्सट्रीम राइट साइड में element has a tendency to gain electron, and that's why when we talk about their metallic character, they are non-metal. Metal has the tendency to lose electron. So periodic table के left side में metals है, they have the tendency to lose electron. हम जब across the period move करते हैं, तो they have the tendency to gain electron. So that's why non-metallic character increases. So left to right, metallic character decreases and non-metallic character increases. Mean between, we have some substances which has some properties of metals, some properties of non-metals. That is called as metalloids. Down the group, the tendency tendency to gain the electron decreases and tendency to lose the electron increases. And so metallic character also decreases in that sense. तो chemistry के definition के हिसाब से देखते हैं तो tendency to lose electron decreases, and that's why metallic character also decreases. So metallic character depends upon tendency to lose electron and tendency to gain electron. So that is the trend what we can see here. So extreme left में alkali alkaline earth metals है, middle part में हम लोग transition metals मिलते हैं, below periodic table यहाँ पे inner transition metals मिलते हैं, है ना, ये सारे metals हैं, और P block के अंदर यहाँ पे सारे metals, non metals and metalloids मिलते हैं. But this definition can be defined on the basis of tendency to lose electron, tendency to accept electron. So extreme metal left side of this मतलब across the period की बात करते हैं, तो across the period की बात करते हैं तो metallic character decrease होता जाता है और non metallic character increase होता जाता है. और top to bottom की बात करेंगे तो metallic character increase हो जाता है और non metallic character decrease होता जाता है. That is what we can say.
regarding the trend. And the last is nothing but chemical reactivity. When we talk about the chemical reactivity, how speedily that substance reacts with some other element. That is, you can say, reactivity. So that reactivity depends upon the tendency of an atom to lose or gain electron easily. When we talk about the extreme left side, where there is a sodium, hydrogen, lithium-like elements, they have tendency to lose one electron. And extreme right side, they have tendency to gain one electron. In between, when we move like this one, so 2, 3, 4 electrons are lost. तो एक इलेक्ट्रॉन छोड़ना इजी बात है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन गेन करना इजी बात है, बट 2-3 इलेक्ट्रॉन लूज और 2-3 इलेक्ट्रॉन गेन करना थोड़ी सी डिफिकल्ट बात होती है. सो केमिकल रिएक्टिविटी की बात करेंगे तो अक्रॉस पीरियड आते हैं हम लोग, तो केमिकल रिएक्टिविटी कम होता है. एक्सट्रीम लेफ्ट में केमिकल रिएक्टिविटी ज्यादा है, एक्सट्रीम राइट में केमिकल रिएक्टिविटी ज्यादा है, मिडिल पार्ट में रिएक्टिविटी मॉडरेट है. सो दिस इज द ट्रेंड व्हिच इज ऑब्जर्व, बिकॉज़ एक्सट्रीम लेफ्ट में एक ही इलेक्ट्रॉन लूज करना है, एक्सट्रीम राइट में एक इलेक्ट्रॉन गेन करना है. नोबल गैसेस उसमें आते नहीं, नोबल गैस किसी भी ट्रेंड में नहीं आता है, ये पहले ध्यान रखिएगा. So that's why extreme left or extreme right, where we have the higher reactivity, moderate middle part is a moderate, having the moderate reactivity, because they have number of electrons to loss or number of electrons to gain. That's why they are moderately reactive. Top to bottom की बात करते हैं. Topper elements are more reactive, lower elements are less reactive, because they are already bulky one. They are already having higher effective nuclear charge, and larger the size, larger the shielding effect. That's why the size being larger, they are less or least reactive, you can say. So this is the reactivity. So reactivity is related with how much number of electrons they have to lose, how much number of electrons they have to gain, or what is their ground state electron configuration tells. Depending upon that, we can have this reactivity. So when we discuss about the chemical reactivity, extreme left side, extreme right side, both are highly reactive. Middle part is moderately reactive. That is what we can say regarding the chemical reactivity. These are the three trends in chemical properties. Number 1 is valency, number 2 is metallic and non-metallic character, and number 3 is chemical reactivity. What is valency? Valency is the capacity of an atom to form a bond. How many bonds any particular atom can form, that is called as a valency, and that depends upon number of electrons lost, number of electrons gained, or how many empty spaces are there for the electrons. So we have seen the valency, what happens, trends left, right, top to bottom. Second is nothing but metallic character. Metallic character हम जानते हैं, the tendency to lose electron is more metallic, tendency to gain electron is less metallic and more non-metallic. So extreme left में non-metals है, extreme left में metals है. So that is the trend. And last is the chemical reactivity. Extreme left side or extreme right side, both are highly reactive, and middle part is moderately reactive. That is the trend what we can say regarding this one. And this is the end of the chapter called the periodic table. So hope so, I appeal all of you. Please go through the chapter where periodic table being a very fundamental chapter for all the organic chemistry, inorganic chemistry, and physical chemistry. Especially if we have to get the inorganic chemistry well, periodic table has to be learned well. Periodic table, then the content, that is electronic configuration, and the place of element periodic table, that has to be studied very well. And finally, we have seen the trends in physical properties. These are useful to write many of the reactions and all. So that's all for this chapter. Again, I appeal, read it well, or if you have any doubt and difficulty, please have interaction with me. See you tomorrow. Thank you very much. Till then, bye-bye.